So, good afternoon, everyone. I hope I'm audible to all of you. So, Palak, Neeraj, Aryan, good afternoon. So, I think last lecture we did some MCQs. We looked at around 50 MCQs in the last lecture, and today I thought we need to just brush up on some theory and then go back to MCQs. Rather, some concepts need to be clear. So I have some questions for you today, just to check whether the the understanding of certain factors is clear or not. So today, let us look at suppose some interesting theory part of it, or I should say that some questions which will trigger your understanding of the multiple choice questions. Say, for example, so I have a question and I want all of you to think about it. So I'm going to put a question on the screen right now. So I believe it will be easy. It won't be that difficult, but I just want to check how you respond to it. So there are, say, for example, three identical coils. So there are three identical coils. Let's call it as A, B, and C. I hope all of you are listening to the question. And they are all in a plane which is parallel to one another. Now, let me say that they're all along the same axis. And if I say that the current, there is a current which is flowing in A and C. So let's say A current is there and C current is there. B and C are fixed. This is fixed and this is also fixed. While coil A is moved towards B. So coil A is the one which is in motion and it is in uniform motion and it is coming towards B. Question to you is there any current induced in B? And if you believe that there will be a current in B, then what would be the direction of that particular current? We have three coils. Okay, so Priya's answered. So we have three coils, all are in the same plane. And yes, there is current, correct. So at least you are able to say that there is current, right? Which is induced because of which coil? Because of A. Does C induce any current in B? Does C put any current in B? No, C will never put because it is fixed. So C will not have any impact on B. So whatever impact is happening is A. So when A is coming towards, what will B do? So according to Lenz's law, B is going to oppose that change which is happening in it, and therefore the direction will be reverse. Is this fine? Have you understood this? Yes, okay. Now, if suppose I have a coil here and I have another coil here, and say I connect this entire setup to a battery and a switch. So there is a switch here. Suppose I have, say, this is my Q coil and say this is my P coil. And so there are two coils which are basically coaxial, they're concentric, two coils which I have placed. What will be the direction of the induced current if I assume that, if I, this is the positive of the battery, this is the negative. So if I am to close the switch, if I close the switch, then the current will be in this direction, which I have drawn for you. So question is,
what will be the direction of the induced current in S if the switch is closed? अगर हम switch को close कर देते हैं तो इसमें कौन सा current flow होगा? Yes, Komal, your answer is correct. Yes, Palak, your answer is correct. What will be the direction of current? अभी फिलहाल कैसे जा रहा है वो? Clockwise जा रहा है. So when switch को बंद कर देंगे तो P का जो करंट है एक्चुअली ग्रो हो रहा है. P में जो करंट है वो बढ़ रहा है. यस, प्रिया, आर्यन, करेक्ट. सो P में जो करंट है वो बढ़ रहा है तो Q क्या करने की कोशिश करेगा? उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, इसलिए इसका डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है. आई होप एवरीवन आंसर्ड एंटी क्लॉकवाइज. नाउ द क्वेश्चन टू यू इज, अभी ये तो स्विच बंद करने पे हुआ, अगर खुल गया तो, स्विच को ओपन कर दिया तो यहाँ क्या डायरेक्शन देखा जाएगा? अगर स्विच को हमने खोल दिया तो क्या डायरेक्शन देखा जाएगा? यस, वेरी गुड. तो जब हम इस स्विच को बंद करेंगे तो P में क्या हो रहा है? P में क्या हो रहा है? करंट डीके हो रहा है, करंट कम हो रहा है. तो what will S again try to do? It will try to oppose it and therefore the direction will change to clockwise. Yes, P में कम हो रहा है तो Q उसको बढ़ाने की कोशिश में वो क्लॉकवाइज चला जाएगा. So it will be exactly opposite. So I hope you'll remember this कि स्विच क्लोज हुआ है इस केस में तो एंटी क्लॉकवाइज था, और जब स्विच ओपन होता है तो इट विल गो क्लॉकवाइज. Okay. Just give me a minute. ओके, सपोज आई गिव यू 2 कॉइल्स. ध्यान से देखना, एक कॉइल यहाँ पर है, एक कॉइल यहाँ पर है, which is connected like this. There is let's say this is AB coil and there is another coil here. Let's call it as XY coil, and which is also connected to some sort of an ammeter. It's a closed switch. And now therefore यहाँ पर एक magnet है. There is a magnet here. There is a magnet here, and this is north of the magnet and this is south of the magnet, and this is coming towards like this. So a magnet is moved in a direction which is indicated by an arrow between the coils AB and XY. Can you suggest, can you tell me what is the direction of current in both the coils? दोनों कॉइल्स में जो करंट फ्लो होगा वो किस नेचर का होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? Okay, so Nandini, Priya, Asmita, correct. Palak, partly correct. Aryan, 1 partly correct. Aryan Mishra, correct. Pradnya, okay, 1 you're telling me, okay. So 2 coil hai and you have to judge what is the direction of current in both of them. It's just checking your concept of Lenz's law again. आप इसमें देखो कि साउथ आ रहा है, साउथ आ रहा है तो इस कॉइल में क्या फ्लो होना चाहिए? साउथ आ रहा है तो क्या होना चाहिए? सिर्फ एक कॉइल की बात करते हैं, एक्स वाई की बात करते हैं. जब हम एक्स वाई की बात कर रहे हैं, साउथ आ रहा है तो यहाँ क्लॉकवाइज होना चाहिए.
आई होप एवरीवन एग्रीज दैट साउथ आ रहा है तो क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए? जब नॉर्थ जाता है तो क्या दिखना चाहिए? नॉर्थ इज गोइंग अवे, देन ऑल्सो इट इज क्लॉकवाइज, इसलिए आंसर इज बोथ आर क्लॉकवाइज, बोथ आर क्लॉकवाइज। यस, नॉर्थ गया तो भी क्लॉकवाइज है, साउथ आया तो भी क्लॉकवाइज है, इसलिए दोनों करंट में डायरेक्शन विल रिमेन द सेम। ओके, आई कैन प्रोसीड। Suppose, say for example, there is a coil and there is a wire which is passing through this coil, and let's say the current in this wire is I. So there is a current I in a wire passing normally through the center of this conducting loop, and it is increasing at a constant rate. If it is increasing at a constant rate, then will any current be induced in the loop? Chaitanya, Lenz's law, I'll just write it here. Okay, 1 minute. चैतन्य, कॉइल रहता है और नॉर्थ आ रहा है, तो नॉर्थ आ रहा है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होता है, और नॉर्थ जा रहा है, अगर नॉर्थ को हम मतलब मैग्नेट को पीछे की तरफ खींचा तो ये साउथ होता है। अगर साउथ आ रहा है, साउथ आ रहा है मतलब मैग्नेट को हम लेके आ रहे हैं तो ये साउथ होगा, और अगर साउथ जा रहा है, हम साउथ को लेके जा रहे हैं तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये है आपका टेबल लेंसेज लॉ का। नॉर्थ आया तो मैग्नेट का नॉर्थ आ रहा है कॉइल की तरफ तो वहां एंटी क्लॉकवाइज होगा। नॉर्थ जा रहा है तो वो जाने वाले को क्या करेगा? अट्रैक्ट करने के लिए साउथ बनकर अट्रैक्ट करेगा। फिर साउथ आ रहा है तो वो उसको अपोज करके रिपेल कर देगा, इसलिए साउथ बनेगा, और साउथ जा रहा है तो अट्रैक्ट करने के लिए नॉर्थ बनेगा। चैतन्य, इज इट ओके? या सो दिस इज द बेसिक फंडा। तो हमारे केस में क्या हो रहा था, एक तरफ साउथ आ रहा था और दूसरे केस में नॉर्थ जा रहा था। तो साउथ आ रहा था और नॉर्थ जा रहा था, मतलब हम ये इसको ले रहे हैं, इसलिए दोनों केस में वो क्लॉकवाइज है। ओके, सो हम यहाँ पर है कि एक कंडक्टिंग लूप है और वहां पर जो करंट है वो इंक्रीजिंग, उसका जो रेट है वो इंक्रीजिंग पे है एट अ कांस्टेंट रेट। सो विल एनी करंट बी इंड्यूस्ड इन द लूप? कुछ होने वाला है क्या? सो आई हैव, इस लूप में कुछ हो सकता है क्या? इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा है, राइट? ये जो कॉइल है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा है, तो क्या इस कॉइल को वो कट कर रहा है? इज इट कटिंग द कॉइल? नो। सो द आंसर इज, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो रेड कलर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वो रेड कलर जो है वो कंडक्टर के चारों तरफ होकर इट्स स्प्रेडिंग आउट, एंड द प्लेन जिसमें वो कॉइल रखा हुआ है, यस, अगर मैंने कॉइल को अगर ये वायर होता और मैंने कॉइल को ऐसा रखा होता, हम बोल सकते हैं देयर इज अ चांस, yes or no? So then the case is different. So in this case it is possible, in this case it is not possible. So वहां पर करंट इंड्यूस नहीं होगा, वहां पर जीरो होगा, hence no current is induced in the loop. Okay, suppose I have two circular coils, so I'm taking one like this and I'm taking one like this. I hope you can see now.
So that the planes of these two circular conductors are perpendicular to each other. एक जैसे आपके टेबल पे रखा हुआ है और एक जैसे बोर्ड पे है. So one is nothing but like this. And उनका दोनों का प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. If the current in one conductor, let me call it as B and let me call this as A. Okay. अगर ये दो कंडक्टर्स हैं और मैंने आपसे कहा कि द करंट इन कंडक्टर B is changed. No, the current in B is changed. If you want, you can assume one current. This is the I current which is flowing. If I say the current in conductor B is changed, will any current be induced in A? Will any current be induced in A? Okay, so Aryan correct, Priya correct. Palak, think again, beta. Nandini no, Tripti no, Raj yes, Aditya no, Chauhan yes. सोचो उसका मैग्नेटिक लाइंस कैसा होगा. क्या वो कॉइल के अंदर से जा रहा है? क्या वो ए वाले कॉइल के अंदर से जा रहा है? You know how you have to imagine where is the magnetic field, right? ये कब पॉसिबल होता कि अगर एक कॉइल ऐसा होता दूसरा भी ऐसा होता. तो वहां हम बोल रहे थे ना, ये केस में हम आपको ये समझा रहे थे. तभी कहा गया वो, आई थिंक आई रेज्ड इट. वो हम स्विच की जब बात कर रहे थे, जब दोनों कॉन्सेंट्रिक है तो वो पॉसिबल है. यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, जो बी बनाएगा, इट विल बिकम पैरेलल टू ए. मतलब ये ऐसे रखा है प्लेट की तरह, आपके टेबल पे रखा है, और ये जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसको कट ही नहीं करेगा. सो देयर इज नो करंट. आंसर इज नो करंट इन. इस केस में पॉसिबल है, इस केस में पॉसिबल नहीं है. इज इट क्लियर बच्चस? दैट परपेंडिकुलर कंसेप्ट हैज टू बी क्लियर. जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है कि वो कॉइल दिखाया है, मैग्नेट देखो कैसे आ रहा है. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लेंसेज लॉ. अगर आपको वीडियो दिख रहा है ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, तो एक कॉइल लिया है, उसको एमीटर के साथ कनेक्ट किया है, और एक मैग्नेट को वो अंदर बाहर लेके जा रहे हैं. So there will be change in current when you put it through the coil. So that direction has to be perpendicular. You know, direction has to be perpendicular to that. Then only there will be current observed in that. Okay. This I think many of you might be knowing, because in 12th standard you must have done. Suppose there are 12 wires of equal length that is connected to a skeleton cube. I hope you've done the cube. So let me think of a cube. Say this is my cube, which I have taken. And let's say I have moved this cube over here, right? So I have moved this cube here. And this is your A, this is your B, this is your C, this is your D, this is your E, this is your F, this is your G, and this is your H. And the magnetic field is also in the same direction, that is B bar. You understood? So the B bar is in the same direction, and the velocity is also in the direction of the magnetic field. What is the EMF in each arm of the cube? What is the EMF in each arm of the cube? क्या इस क्यूब में EMF इंड्यूस होगा? क्या इस क्यूब में EMF इंड्यूस होगा? I want every concept, every kind of question to be very clear. So I have this cube which is moving towards the right. I have the magnetic field. So will there be any kind of EMF induced in this cube? Yes, Aryan, correct. Tripti, correct. Nandini, correct.
You know, the basic concept goes back to, if you have done F is equal to QVB sine theta. The basic concept goes back there. F is equal to QVB sine theta. The angle between V and B is very important. The angle between V and B, if you see by the Lorentz force concept, velocity और magnetic field दोनों zero angle बना रहे हैं, zero बना रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे V और B क्या बना रहा है, zero बना रहा है. अगर वो zero बना रहा है, so you can judge what I'm trying to tell you. क्या होगा? The force will be zero because QVB sine of zero is going to give you zero. So I hope you understand that there'll be no EMF induced here. Okay. So let us look at something more. Can anybody tell me why do birds fly off a high tension wire when current is switched on? You know, they sit on these wires. Have you seen that the birds sit on these wires? So when they sit on these wires, basically what happens is they feel a force of repulsion. Remember that, because the body is conducting and they feel that the induced current, there is some sort of a current which is set up, because they, if you see that they will never sit with both legs. They, some of them sit with only one feet, you know, एक feet लगा के वो बैठते हैं. It's like एक single point पे बैठते हैं. So if it is on high tension wires, then they do not, because again that is due to repulsion and therefore they fly off. So this is just a casual question. This is just a casual question. On the right side, if you see the GIF or the video that is shown to you, you can see that when a metal ball is sent through a conducting loop, can you see that the velocity of that ball is reducing? I don't know whether you can see that. So that is also a concept of EMI. When we are passing something to the velocity does make a difference. So you'll see that it has slowed down and then it has suddenly increased and it falls out. So that is also a concept of eddy's current. And these are principles that you must see, you must visualize, and you must see it. So now there's an iron bar falling through a hollow region of a thick cylindrical shell made of copper experiences a retarding force. Okay, so just like something that you can see on the picture, but if there is an iron bar, for example, which is following through a very hollow region of a very thick cylindrical shell. So there is a thick cylindrical shell and I have put a iron bar here and it is following, and you will see that it is experiencing some sort of a retardation. मतलब उसकी speed थोड़ा affect हो रही है, जैसे आपको right side पे दिख रहा है. क्या आप कुछ बता सकते हैं why? I have already given you the answer actually. How can you conclude what is happening to the iron bar? I've already given you the answer, but what is your understanding? Whatever you're seeing in the video below, it is nothing but the effect of, it is nothing but the effect of, can you hear me? Am I audible to all of you? I just had some connection issue. Hello, you can hear me? Okay. So the reason why this happens is because of eddy's current. हम लोग जब कॉइल की बात करते हैं तब हम एडीज करंट की बात नहीं करते. जब हम मेटल की बात कर रहे हैं, पूरा मेटल के रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, तब भी एडीज करंट की बात हो रही है. इज दैट क्लियर? जैसे प्लेट याद है आपको, हम लोग क्लासरूम में कर रहे थे, परफोरेटेड प्लेट. एक प्लेट में बहुत सारा होल्स रहेगा और एक प्लेट एकदम फुल रहेगा, फिर दोनों को ऑसिलेट कराया तो आपको पता है कि जो फुल था, जिससे परफोरेशन नहीं था, होल्स नहीं था, वो पहले रुकेगा. तो जब मैं मेटल्स की बात कर रही हूँ तभी याद रखना, वी टॉकिंग कंप्लीटली अबाउट,
वी आर टॉकिंग कंप्लीटली अबाउट एडीज करंट. कोई भी होल मेटल रहेगा तो एडीज करंट की बात हो रही है. ठीक है. Then I'll take a few questions, then go for MCQs. I don't think you will have to do this. Artificial satellite is not required. Okay. Now, say for example, there are two spherical bobs. Okay, one is metallic and the other is glass. एक ही size के हैं. And I am saying that they are allowed to fall freely with the same height above the ground. आपको क्या लग रहा है कि which one will reach earlier and why? Which one will reach earlier? दो spherical bobs है. You can take it as metal balls है. One metallic है, other glass है of the same size. और दोनों को हमने एक particular height से नीचे गिराया. तो कौन सा वाला पहले पहुंचेगा? It is based on what you saw the video in the previous case. कौन सा वाला पहले पहुंचेगा? अच्छा, किसमें मैग्नेटिक फील्ड या एडीज करंट या कुछ तो इंडक्शन. इज अर्थ अ मैग्नेट? इज अर्थ अ ह्यूज मैग्नेट? Yes. Now you think, if earth is a huge magnet, there is earth's magnetic field present. So glass or metal दोनों को नीचे खींचा. So what do you think? Which one will reach first? Correct. Correct. Glass वाला पहले पहुंचेगा. The glass one will reach faster earlier to the ground than the metal one, because the metal one, due to the eddy's current, will experience retardation. So याद रखना कि glass वाला पहले पहुंचेगा, because magnetic field of earth will. आर्यन, एक मेटल बॉल है और एक ग्लास वाला है. उन दोनों को हम नीचे गिरा रहे हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन ये है कि कौन पहले पहुंचेगा. तो ग्लास वाला जो है वो पहले पहुंचेगा, क्योंकि जो मेटल वाला है उसमें एडीज करंट होगा. एडीज करंट के इसलिए तो मैं ये आपको दिखा रही थी, ये वाला. सो व्हेनेवर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड वी आर ट्राइंग टू पुट समथिंग थ्रू इट, देन इट एक्सपीरियंसेस फोर्स. ओके. ओके. नाउ, can anybody tell me why is the spark? Yeah, I can do that, Komal. Quickly, I will tell you. Why is the spark produced in the switch of a fan when it is switched off? आपने देखा रहेगा कि आप सडनली फैन के स्विच को बंद करते एक छोटा सा स्पार्क दिया. स्पार्क नहीं समझता है, एक छोटा सा, you don't know what is spark. प्रिया, वो इलेक्ट्रिसिटी जैसा दिखता है ना कभी कभी ऐसे, जब आप स्विच बंद कर देते हैं तो एक ऐसा लग रहा है कि वहां इलेक्ट्रिसिटी का एक आपने ऐसा झटका, नॉट झटका एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट झटका, बट यू कैन सी इट बेसिकली. एक छोटा सा स्पार्क दिखाई देता है. ओके, देन व्हाई? ओके, ठीक है, आपने जो भी, व्हेन यू स्विच ऑफ समथिंग, the fan, the television, so you see a spark. What could be the reason behind it? So you must remember that the break of the circuit is very sudden. Yes, correct. So some of you are answering it correctly. So please remember that the break of the circuit, हम एक circuit को break करते हैं जब हम on और off करते हैं, is very sudden. So it's done very sudden when with a less span of time. So what happens is there is a large EMF that is induced across that gap. जब आप स्विच को बंद करते हैं, इसका मतलब क्या है? अगर आप स्विच को बंद करते हैं तो वो गैप बंद हो रहा है, और जब आप उस स्विच को खोल रहे हैं तो ये जो 2 पॉइंट होता है वहां गैप डेवलप हो रहा है. सो अ लार्ज ईएमएफ इज इंड्यूस अक्रॉस द गैप. ठीक है. तो इस गैप की वजह से वहां पर एक स्पार्क अकर होता है. ओके.
Suppose I take a lamp which is connected. So I'm taking a lamp which is connected parallel to a large inductor. Okay, so I have connected a lamp in parallel with a very large inductor and it glows very brightly before going off. So let's say there is a switch here, there is a battery here, there is a switch here. Okay, so a lamp is connected in parallel and glows brightly before going off when the switch is put off. मतलब हम जब उसको बंद कर देते हैं, स्विच को ओपन कर देते हैं, तो सडनली ये एकदम ब्राइटली ग्लो होता है. तो आप अभी गेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड यू व्हाई दिस विल हैपन. सर्किट अभी ब्रेक हो रहा है. सेम चीज जो हमने यहाँ समझा है, क्या आप यहाँ लगा पाएंगे? क्वेश्चन क्या है कि एक लैम्प है विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ लार्ज इंडक्टर एंड इट विल सडनली स्टार्ट ग्लोइंग बिफोर गोइंग ऑफ. जब हम स्विच सडनली छोटा सा, यू विल सी दैट इट इज ब्राइटली. व्हाई? अच्छा, जब भी सर्किट ब्रेक होता है, आपको क्या समझाया प्रीवियस केस में, जब भी सर्किट ब्रेक होता है तो वो दोनों पॉइंट पे क्या जमा हो जाता है? देयर इज अ लार्ज ईएमएफ विच इज सेट अप इन दैट इंडक्टर. ओके, बिकॉज ऑफ दैट दिस लैम्प विल स्टार्ट ग्लोइंग. तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको. इज दैट क्लियर? मतलब दोनों अलग अलग कुछ नहीं है. When they talk about in a real time case or they talk about putting an inductor parallel to a inductor, तो आपको अभी समझना है कि दोनों सेम चीज बात हो रही है, कॉमन चीजें बात हो रही है यहाँ पे, कि कहाँ कहाँ सिचुएशन सेम कंसिडर करना है आपको. आई एम टेलिंग यू ट्रिक्स एक्चुअली. Are you understanding? So whenever you see this setup, then you have to think of the same setup that I told you for a fan or a TV or whatever you're switching off, you're seeing the spark. So the answer will remain the same. Okay, what about this? Why are the inductors, okay, inductors made of copper? Inductance के जो coil है, they are made of copper. Why? What do you think? आपको क्यों लग रहा है कि हम हमेशा कॉपर ही बात करते हैं? कॉपर वायर्स, कॉपर कॉइल्स. If you are talking about transformer also we talk about copper. So what do you think? Why are the inductance coils made of copper? What is the basic property of copper? Yeah, Pankaj, that one is correct. Yes, it has a very low resistance. So one of the main reasons is small resistance. And if there is small resistance, what can we say? We can say that the induced current is very large. ठीक है? Everyone, this is clear? Next. How does self-inductance of a coil change when an iron rod is introduced in it? What happens to the self-inductance of a coil when an iron rod, ये iron का बना हुआ rod is inserted into it? What happens to the self-inductance of the coil? That means L. We are aware that flux is proportional to I. We are aware that flux is a lie. L is phi by I. What is soft iron का सबसे बड़ा property? What is more over there? Soft iron का कौन सा factor सबसे अच्छा होता है? Whenever we are talking about iron, we are talking about ferromagnetism, and when we are talking about ferromagnetism, तो कौन सा property सबसे मशहूर वहाँ है? So iron का सबसे important चीज है mu r. What is mu r? What is mu r? Relative permeability. Yes. So soft iron का relative permeability बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है. So if mu is very very large, यानी कि mu r is very very large, then self inductance क्या होगा?
याद है आपको एक फॉर्मूला बताया था, म्यू नॉट n square a by l. I hope everyone remembers this formula. Here, this is the length, okay? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल एक फॉर्मूला बताया गया था आपको सेल्फ इंडक्शन के लिए। तो म्यू नॉट यानी कि जब आयन इंट्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल, बिकॉज म्यू इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर। सो व्हाट हैपेंस इज, जब हम एयर की बात करते हैं तो हमारा म्यू आर 1 होता है, इसलिए हम कभी म्यू आर को लिखते नहीं है। जब मीडियम इसके अंदर एयर है तो हमेशा हमारा म्यू आर 1 होता है। बट अगर हम आयन को इंसर्ट कर रहे हैं तो आपके फॉर्मूला में भी म्यू आर आएगा। इसका मतलब है अगर आयन इंट्रोड्यूस हो रहा है तो पूछा क्या गया है कि व्हाट हैपेंस टू सेल्फ इंडक्टेंस। सो योर आंसर इज सेल्फ इंडक्टेंस विल ऑल्सो what will happen to self inductance? It will also increase. Yes or no? Because mu r बढ़ रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, परमिएबिलिटी ज्यादा है, तो वहां पर आपका सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ेगा। Is it very very clear now? Okay, done everybody? Shall we do some MCQs and then come back? Okay. Yeah, he's feeling quite sleepy. I'm sure you also happens this at home. When you're studying, then this is, I'm just showing you what happens to you. So when you're studying, you have no choice. Yeah. Okay. So as I want to just revise eddy's current, let's revise eddy's current. The motion of the copper plate is damped. You know what is the meaning of damping? So if I have प्लेट विच आई हैव हंग और मैंने इसको ऑसिलेट करवाया, ओके। सपोज मैंने उसी प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, दिस इज नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट, दिस इज साउथ ऑफ द मैग्नेट, एंड देन आई ट्राइड ऑसिलेटिंग इट। विच वन विल स्टॉप फर्स्ट? Which one will stop first, the first case or the second case? Which one will stop first? Correct. Okay. So everyone says second case because of eddy's current. एडीज करंट में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ये एक्सपीरियंस करते हैं उसको कहते हैं डैम्पिंग इफेक्ट। डैम्पिंग इफेक्ट मतलब ऑसिलेशन जो है वो ऐसे 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 होकर डैम्प हो जाएगा। वी से दैट द ऑसिलेशन एंड फाइनली ये जो सेकेंड वाले केस में वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, सपोज मैंने कहा कि मैंने इसको भी नॉर्थ साउथ दिया है, ये एक कॉपर का प्लेट है, ओके, और ये एक कॉपर का स्फीयर है। विच वन विल स्टॉप फर्स्ट? विच वन विल स्टॉप फर्स्ट? यस, याद रखना एडीज का सबसे बड़ा चीज क्या है, एडीज में क्या आपको ट्रिक बताया था, जहां ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्लेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा कि स्फीयर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां एडीज करंट ज्यादा होता है। एडीज करंट ज्यादा होता है, इसलिए आंसर क्या है? कॉपर। ओके, आई एम मेकिंग अ स्लाइड चेंज नाउ। आई एम गोइंग टू मेक अ स्लाइड चेंज नाउ। मैंने इसमें होल्स डाल दिया। विच वन विल स्टॉप फर्स्ट? विच वन विल स्टॉप फर्स्ट? इसमें कौन सा वाला पहले रुकेगा? नो, दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट है, और एक प्लेट में मैंने होल्स डाल दिया, एक प्लेट में मैंने होल्स डाल दिया, तो वन में कोई होल नहीं है, सेकंड प्लेट में मैंने होल्स डाल दिया।
यस, तो ये वाला पहले रुकेगा, क्योंकि एडीज के कंसेप्ट में, एडीज का कैसा कंसेप्ट था याद है आपको? ऐसे सर्कल्स, एडीज के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव होने के लिए उनको स्पेस चाहिए होता है। तो यहाँ ना वो सर्कल्स बना नहीं पाते। एडीज का जो सर्कल फॉर्मेशन है, ये होल्स की वजह से दे आर अनेबल टू डू, जबकि पूरे प्लेट में अगर उनको बनाना है, इट बिकम्स इजी। एडीज मतलब they are also called as Foucal's currents, if you remember. Eddies were also called as Foucal's currents, right? So whirlpool, जैसे पानी में whirlpool होता है, वैसे eddies effect देखा गया है. So let's do some questions. Okay, just tell me this. Self-induction is also known as? Last time I'd asked you. Self-induction is also known as? No, not back EMF. I asked you, somebody had answered correctly. Self-induction is also known as? Very good. Electrical inertia. It is also known as electrical inertia. ये भूलना नहीं है. Self induction is also known as electrical inertia. Can you answer this question? Now this is a combination of things that we have done. So there is a solenoid with an iron core and a bulb are connected to a DC source. So how does the brightness of the bulb change when the iron core is removed from the solenoid? Let me see if you can think. So a solenoid is there which has an iron core. So iron is inserted and there is a bulb which are connected to a DC source. The question is, how does the brightness of this bulb change? Any idea? Very good. So I can see that some of you all are using your, yeah, thinking about it. Yes, yes. Yes, Palak, Aryan Mishra, Anand, Trupti Vaja. Yes, there will be no change because which battery is this? Is it changing? Will the bulb show any kind of brightness decrease? Because the battery is DC, the brightness of this bulb will remain unchanged because here the reactance is zero. You know, here we don't talk about it only because our XL is going to be zero because XL is 2 pi FL and DC में frequency zero होता है, तो हम यहाँ इसकी बात नहीं करते. यहाँ कोई change है ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा. Okay, let me check whether you can think about this. एक ग्राफ है, ओके, ये फाई है, ये आई है, और यहाँ पर दो ग्राफ दिए, ऐसे दिया और ऐसे दिया. Let's call this A and let's call this B. Can you tell me if this plot is flux versus current for two inductors A and B? दो inductors हैं A और B. Which of the two will have larger value of self inductance? Which of these two will have a larger value of self inductance? Which of these two will have a larger value of self inductance?
यस, ये जो ग्राफ है इसका स्लोप क्या है, कोई मुझे बताएगा? यस, ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट। इसका स्लोप क्या है? स्लोप इज सेल्फ इंडक्शन, राइट? Because slope is always y by x, right? So y upon x. So this is nothing but slope जो है वही तो self inductance है, right? और आप देखेंगे कि करंट जो है, अगर हम इसका पकड़ेंगे तो करंट यहाँ आएगा, कम आएगा, और इसका पकड़ेंगे तो करंट ज्यादा आएगा। तो जिसका डिनोमिनेटर कम है उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा। So A will have more self inductance than B. Clear है ये concept? Everyone? Okay. Can you try this on your own and tell me? पढ़ो उस क्वेश्चन को और मुझे आंसर दो, because I have already spoken about it. If the self inductance of an air core inductor increases from 0.01 millihenry to 10 millihenry on introducing an iron core into it, what is the relative permittivity, relative permeability of the core? That means you are going to tell me the answer of what? You're going to tell me the answer for? You're going to tell me the answer for what is mu r? कौन बताएगा? I already gave you the formula sometime back. I just gave you the formula. Harir Mishra, your answer is correct. Tripti Vajay, your answer is correct. हमने एक फॉर्मूला दिया था आपको थोड़ी देर पहले, सी एल ऑफ एन एयर कोर इंक्रीजेस, एल को बढ़ाया इधर। एल और म्यू का क्या रिलेशन है? जब एयर कोर रहेगा, फॉर एयर कोर, ओके, एयर कोर रहेगा, सो एल नॉट, अगर एयर को पकड़ते हैं, इट विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अगर आयन कोर रहेगा, सो फॉर आयन कोर, if I'm going to introduce iron, then L will become mu n square A upon L. Now, can you think about it? If I take the ratio of this, that is L upon L naught, I will get mu upon mu naught. Agreed? Now, what is mu equal to? Mu is equal to mu naught into mu r. So mu r is nothing but mu upon mu naught. इसका मतलब है यही म्यू आर है। इधर एल का वैल्यू कितना दिया है? एल और एल नॉट का वैल्यू आपको पता है, इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम, सो एल इज 10 मिली हेनरी अपॉन 10 रेज टू -2. So what is the answer? What is the answer for mu r? What answer are you getting? Yes. I hope everyone is getting 1000 now. Everyone is getting 1000. Is everyone getting 1000? Yes. Okay. Now, these are the last few questions before we jump to the MCQs. Why is the induced EMF in a coil? It's a coil, okay? Why is the induced EMF in a coil 0 when its plane is normal to the magnetic field, even though maximum flux is linked with the coil in this position? Why is it 0?
What would be the one line answer? अगर मैंने कॉइल लिया और बहुत ज्यादा फ्लक्स है उसके अंदर, why is it not happening? What is not taking place there? There is no rate of change of flux. What is the answer? There is no rate of change of flux in this position. So EMF will be 0. Change in flux does not happen. Good. Okay, second last question. Why are the resistances in the coil double wound? Can anybody tell me? Why are the resistance coil double wound? आपने देखा रहेगा कि हमेशा कॉइल्स की जब हम बात करते तो हम बोलते हैं कि बहुत सारे हम वाउंडिंग करते हैं उसमें. Any idea? Anybody? Why are resistances always double wound? Actually ऐसे coils में ना current always flows in opposite direction. So the net magnetic field जो है वो actually cancel हो जाता है. इसलिए हम लोग हमेशा डबल वाउंड कॉइल्स यूज करते हैं ताकि उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें इफेक्ट नहीं करेगा. So this is a very important thing, you know. So whenever we are making double wound, याद रखना the current in both the wires या जो wires flow होते हैं वो हमेशा opposite direction में होते हैं, जिसकी वजह से the magnetic field linked with the coil is going to be always 0. And hence these inductive effects are always eliminated. Okay, the last one now before the MCQs. A metallic piece gets hot when surrounded by coil carrying high frequency AC. Why? Why? A metallic piece gets hot when surrounded by a coil carrying high frequency AC. Why? Yes, very good, Aryan. Okay. Yes, Pradnya, very good. Okay. Yes, Palak, very good. The single your answer for this is, याद है एडीज करंट ट्रांसफार्मर में बहुत प्रॉब्लम होता था एडीज की वजह से, because as electrons are moving with so much of high speed, the tremendous amount of heat that is produced due to the eddies current heats up the entire thing. So I hope this is clear to you. So let's jump and go back. Now you will be able to answer 52. Now tell me the answer for 52. We had stopped at 51 in the last lecture. Can you tell me 52? A magnet is dropped down an infinitely long vertical copper tube. Now the answer should be crystal clear to you. It doesn't come to rest exactly, but it will have some sort of a velocity. And when the magnet is dropped, it's not the metal which is dropped. So when the magnet is dropped, basically what happens is its velocity keeps on increasing, because it's a infinite kind of a long tube, right? So there is obviously going to be some magnetic flux which is related to the copper tube. Hmm. 52 answer is going to be A.
because here it's a combinational question of eddy's current and Lenz's law. So if the bar magnet is going to fall vertically through this copper tube, then you have to think, what will happen. The magnetic जो उस magnetic flux जो होता है, which is linked with that copper tube, it will change, right? The magnetic flux is going to change because now suddenly a magnet has been introduced, and eddies current are going to happen in the tube. जो body of the tube होता है जिसके through ये magnet को गिराया जा रहा है, उधर क्या होने वाला है? There is going to be eddies current in the body of the tube, yes or no, which is going to oppose this falling of the magnet, and therefore that experiences a retarding force. Okay, so this retarding force increases the velocity of the magnet, and finally it becomes equal to that of the magnet. यानी कि यहाँ stop नहीं होने वाला है, but the answer is strictly option A. So this is a very important question, and there is likely of mistake in question number 52. Let's come to motional EMF and motional EMI. So what we completed today is the Faraday's and Lenz's law complete concept and short answers. I hope it is to some extent clear. The theoretical aspect of it has to be clear, because mathematical ones I'm sure that you will be able to do. Let's come to question number 1 of the motional EMI section. So what I'm going to do from tomorrow onwards is I'm going to send some questions across to y'all. I want y'all to solve those questions prior to the lecture, and then try it on your own. Don't cheat, because there is no point cheating. You have to tell me what doubts you have in those questions, because that way you will be doing both ways, first trying on your own and then sitting with the professor. So tonight I will send it to Prashant sir before tomorrow's evening lecture. I think we have a 7:30 lecture tomorrow, right? So I think you will have some time to go through it. I won't give you much. I will give you 20 to 25 questions. I want you to try solving it, and then whatever question you did not get at all, we will give focus to that particular question. I hope that works. Anyway, let's start with this. So now look at the rectangular coil ABCD, which is rotated anti-clockwise with a uniform angular velocity about the axis. Now the axis of rotation of the coil as well as the magnetic field are horizontal. So what do you think? What is E equal to? So don't forget, E is equal to E naught sine theta. We are talking about alternating current section. When will theta be maximum? When will theta be maximum? Yes, so theta is maximum when the plane of the coil has to be perpendicular. Yes or no? So is this correct? It is same like one of the diagrams I had shown. E is equal to E naught sin omega theta. So E जब maximum हो रहा है, कब होना चाहिए? कब होगा ये? Which option? Yes, when the plane of the coil,
Yeah. So do you remember the plane of the coil concept? So if the plane of the coil is parallel to magnetic field, ऐसे दिखता था, area vector is in this direction, A bar and B bar. When the plane of the coil is perpendicular to magnetic field, then आपका A bar और B bar same direction में रहता था. Which one rotation occurs? First case or second case? रोटेशन के लिए टॉर्क जरूरी है, तो फर्स्ट केस या सेकंड केस, किस में रोटेशन अकर होगा? आप अपना आंसर खुद चेंज करेंगे. दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल, plane of coil is parallel to magnetic field, and here plane of the coil is perpendicular to magnetic field. किस केस में कॉइल मूव होने वाला है, ए केस में कि बी केस में? व्हाट इज टॉर्क फॉर्मूला? व्हाट इज टॉर्क फॉर्मूला? तो ही हम वहां जा सकते हैं. व्हाट इज टॉर्क फॉर्मूला? टॉर्क का फॉर्मूला इज बी ए साइन थीटा, एन बी ए साइन थीटा होता है. आप मुझे बताओ कौन से केस में रोटेशन के चांसेस है, फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? When the plane of the coil is parallel to the magnetic field, A bar and B bar are perpendicular. आप एरिया वेक्टर के बारे में भूल रहे हैं. एरिया वेक्टर हमेशा कैसे खड़ा होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ए बार और बी बार क्या एंगल बना रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री. सेकेंड केस में जब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो ए और बी क्या एंगल बना रहे हैं? 0. तो कौन से केस में टॉर्क अप्लाई होगा? कौन से केस में टॉर्क अप्लाई होगा? आप सब सही दे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती. This is a very basic concept taught to you in the beginning, the first lecture of EMI. Which case the angle is 90? Which case the angle is 90? Which case the angle is 90? Yes, the first case. Why are you all saying second case? सेकेंड केस में प्लेन परपेंडिकुलर है बट एरिया वेक्टर से एंगल बना रहा है. सो इट इज ऑप्शन ए, द फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में होगा. अगर आप इस क्वेश्चन को अभी वापस पढ़ेंगे, हाउ शुड बी द प्लेन ऑफ द कॉइल देन? प्लेन ऑफ द कॉइल कैनॉट बी एट राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड. अगर राइट एंगल है तो कुछ नहीं होगा, टॉर्क ही नहीं होगा इसमें, जो आप सी बता रहे थे. The plane of the coil has to be horizontal. A is the right answer. जब plane of the coil parallel होता है तो magnetic field जो हम निकालते हैं फॉर्मूला में, वो A और B के बीच का एंगल है. इसलिए हमारा आंसर A ऑप्शन होना चाहिए. क्लियर है? I thought you remembered like all this concept. Plane of the coil parallel होना चाहिए. If you remember, I put some picture also here. I don't remember where is that picture, but I had put a small video where we were rotating. ये जो हो रहा है, ये अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे इसमें, अगर आप इस वीडियो को देख रहे थे, अगर आपने इसको देखा था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, राइट? और कॉइल भी ऐसे ही है. तो दोनों एक दूसरे से पैरेलल रहते हैं, तब जाके ये रोटेशन पॉसिबल है. सो द कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा और उसी डायरेक्शन में हम क्या रख रहे हैं? ऐसे रख रहे हैं उसको. हम इसको ऐसे और इसको ऐसे नहीं रख रहे. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सो दिस डायग्राम इज, दिस वाज फॉर दैट ओनली. Okay, let's try the second one. I think everyone should get the second one because it's very easy. There is a 10-meter wire which is kept in the east-west and it is falling with a velocity of 5 meters perpendicular to the magnetic field. What is the induced EMF in this coil? ये normal rod falling है. Rod falling का formula है E is equal to BLV.
So it is a 10-meter wire. L is given to us. We have velocity and we have magnetic field. Can you quickly substitute and tell me what's the answer? BLV, 10 into 5 into 0.3 into 10 raised to minus 4 Weber per meter square should give you how much? Yes, so I hope everyone got 1.5 millivolt as your answer. Okay. Let's look at the third question. There is an electric potential, potential difference, which will be induced between the ends of this conductor when the conductor moves in the direction of, कौन से direction में move करने पर इस कंडक्टर पर, देखो नॉर्थ साउथ के मैग्नेट में कंडक्टर दिया है और उन्होंने बोला है कि पी डायरेक्शन में मूव होगा, एल डायरेक्शन में मूव होगा, एम के डायरेक्शन में मूव होगा, क्या क्यू के डायरेक्शन में मूव होने पर इधर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने के चांसेस हैं. When will the magnetic field be induced? When will the conductor cut the flux? कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में मैं इसको मूव कर रहा हूं? मतलब आपको ऐसे सोचना है ये नॉर्थ है और ये साउथ है और मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और मैंने एक रॉड यहाँ रख दिया है, तो कौन से डायरेक्शन में मूव करोगे तो कट होगा. करेक्ट, करेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट. इट इज ऑप्शन डी, एम के डायरेक्शन में ऊपर ऊपर करना पड़ेगा उसको. Question number 4. Two rails of a railway track insulated from each other and the ground are connected to a mini voltmeter. What is the reading of the voltmeter? मतलब EMF पूछ रहे हैं. When a train travels with a speed of, they have given you the velocity is 180, so 185 by 18 करके आप meters per second में convert करें. Given that the vertical component of the, आपको याद है ना, train चला तो it is BVLV, rod गिरा तो it is BHLV. I don't have to teach you this, right? ट्रेन चला, प्लेन चला, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, क्योंकि जब चीजों का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है देन फॉर्मूला में वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा. जब चीजों का वेलोसिटी वर्टिकल होता है तो BHLV लगेगा. याद है? देयर इज टू फॉर्मूलाज, वन इज BVLV एंड वन इज E is equal to BHLV. ये कब यूज होता है? इफ द मोशन इज horizontal. If motion is horizontal, then we use what is equal to BVLV. And if the motion is vertical, then we use BHLV. So here we are using BVLV. It is 1 meter, magnetic field is given to you, velocity 180 into 5 by 18. So that should be 50, right? Tell me how much. How much are you getting? Correct. So I hope everyone is getting option C. Everyone? Good. So when a wire loop is rotated in a magnetic field, the direction of induced EMF changes in each. When a wire loop is rotated in a magnetic field, the direction of EMF changes once in each. What? Once in each. What? कब ये EMF चेंज होता है? ये EMF कब चेंज होता है? करेक्ट, करेक्ट. EMF चेंज हो रहा है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है. तो जब ये रोटेट हो रहा था, कॉइल रोटेट हुआ था, तभी तो हमको मिला. एंड वी यूज्ड टू से बनाओ साइन थीटा. याद है? E is equal to BAN ओमेगा साइन थीटा. तो बनाओ साइन थीटा में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जब वायर रोटेट हो रहा है तो EMF कब चेंज होता है? सो द EMF चेंजेस एग्जैक्टली इन हाफ रेवोल्यूशन. सो एग्जैक्टली हाफ रेवोल्यूशन पे वो चेंज हो जाता है. यस. Question number 7.
An aeroplane in which the distance, aeroplane है तो BVLV यूज करेंगे कि BHLV यूज करेंगे? Which one? BVLV की BHLV, क्या यूज करने वाले हैं आप? How is the motion? Is the motion horizontal or vertical? एरोप्लेन कैसे जाता है? एरोप्लेन का मोशन कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल. अगर हॉरिजॉन्टल है तो क्या फॉर्मूला यूज करना है? E is equal to, E is equal to क्या यूज करना है? BVLV यूज करना है. E is equal to BVLV, not BH, Pankaj. How can you use BH? What did I just say? यहाँ पर ध्यान दीजिए आप. अगर मोशन हॉरिजॉन्टल है तो हम BVLV यूज करेंगे, अगर वर्टिकल है तो हम BHLV यूज करेंगे. तो प्लेन इज going to give you horizontal motion. That's why the component Earth's, इसलिए यहाँ पे लिखा भी जाएगा vertical component of Earth's magnetic field दिया जाएगा. So please solve it and tell me how much you're getting. Please solve question number 7. See what's your answer. Correct. Yeah, so I think everyone is getting option B. Are you getting 1 volt, everybody? अच्छा. Now, whenever we talking about a rod rotating, याद है आपको? Whenever we talk about a rod rotating, if you remember, we had a formula which was Bilwa by 2, which is BL square omega by 2, which is BL square B pi L square F. ऐसा 3 formula था. So whenever I talk about something like a copper disc or I talk about a metal rod which is rotating, so दोनों यही formula पे dependent है. So ये मेरा hint है, अभी आप try करो. ये मेरा hint है, अभी आप try करो. A copper disc of radius is given to us. जो भी length होता है वही अपना radius होता है. So radius of 0.1 is rotated about its center with 10 revolutions per second. That means what data is given to you? 10 revolutions per second मतलब क्या दिया है आपको? What is given to you? Frequency is given to you. Very good. In a uniform magnetic field of how much? 0.1 Tesla. That is your magnetic field with its plane perpendicular to the field. The EMF induced across the radius of the disk is. Find out the EMF. Everything is given to you. B is there, R is there, pi is there, F is there. Chalo, find out. करेक्ट 8C आ रहा है. यस, पाई को रखते हुए अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग C. वेरी गुड. 9 सेम फॉर्मूला है. अ मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर. So L is 1, rotates about its ends at an angular velocity of, angular velocity is omega. So it is 5 radians per second. Yes, so it's direct. You have to use this one. BL square omega by 2. And magnetic field is given to us. What is the EMF? B is given to us 0.2. इसको 2 into 10 raised to minus 5 ले सकते हैं आप. L का square is 1 का square. Omega is 5 upon 2. What is 9 का answer? Yes. Aryan correct. Palak, please check again. Yes, Chauhan Komal correct. Trupti, please check again. Pradnya correct.
What would be the answer for this? Yes, Nandini Chaurasia, correct. Yes, Neeraj, correct. Satish Shinde, correct. The answer should be 50 microvolt. 50 into 10 raised to minus 6 मिलना चाहिए आपको. 50 into 10 raised to minus 6 मिलना चाहिए आपको. Okay, let's look at question number 10. 10 will be the last question. Chalo. Gear up now. 10 we'll conclude because we did a lot of theory today. A conducting square loop L है and resistance R है which moves in this plane. तो आपको cross indicate कर रहा है, मतलब magnetic field जो है it is directed inwards in its plane with a uniform velocity of v perpendicular to one of its sides. The magnetic induction B, constant in time and space, pointing perpendicular and into the plane of the loop exists everywhere. The current induced in the loop is, what kind of current will be induced here? What kind of current will be induced here? Y'all are not thinking. You guys are not thinking, I feel. The second line of this has to be noted. A magnetic field constant in time and space pointing perpendicular and into the plane of the loop exists everywhere. We are right at the middle. This I will be doing this concept. Actually, it is changing. मैंने जब इसको सिखाया था बताया रहेगा आपको. एक होता है entering, एक होता है बीच में, एक होता है exit. तीनों केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलग है. तो जब वो सेंटर पे रहता है तब याद रखने का नो फ्लक्स इज इंड्यूस्ड इन द सेंटर. इसलिए द आंसर ओवर हियर इज 0. I will do the theory for that when I'll do a graph. I'll go to a higher order one. Okay, so I hope you were able to manage for today. You were able to understand what was going on. So we will continue from the next questions. So I will send you kind of a PowerPoint, which I feel that will be a PDF. Please try to solve it and then we discuss it. So once you have already done, I hope you will do it sincerely so that you will be able to ask doubts then. Is that clear? Otherwise, if you don't want it, then we'll continue this tomorrow. I have no objection. Some of you all seem to not want to do any homework. It's not homework exactly. So then we'll continue with this only online. I have no objection. Just tell me which concept you are facing a difficulty. Okay, mutual induction. Okay, anything else? Okay, you all will solve, then I'll give. Okay, I'll send the questions. Okay, okay. I'll send it through, sir. Please take it, try to solve it, and then we discuss the doubts. Then the doubts will come because when you try to solve it, maybe at this instant you're not thinking about it, but later you will think, and therefore it will be beneficial. So I thought we'll do it like that. I'll send the PDF first, you solve it, and then I solve it. So I think that way the doubts will get cleared more efficiently. Okay. Thank you then. Bye-bye. Take care.